बेटा पहले से देख के रखा करो, अगर लर्न नहीं है तो अपने पास एटलीस्ट ओपन करके रखा करो, कहीं लिख। Sonia ma'am, you are muted. Sonia ma'am, please unmute yourself. ओके मैम, थैंक यू। एंड बच्चे प्लीज आप किसी को भी अनम्यूट, किसी को भी म्यूट नहीं करेंगे, ठीक है, स्पेशली योर टीचर्स, बिकॉज आई विल गेट अ नोटिफिकेशन कि किसने म्यूट किया है, और फिर उस बच्चे को हम ग्रुप से आउट भी कर सकते हैं, बिकॉज प्रिंसिपल मैम इज वॉचिंग दिस रिकॉर्डिंग, राइट? यस वासवी, आर यू रेडी विद द थॉट ऑफ द डे बेटा? So Vasvi is taking so much of the time. Okay. Let me ask from ID with the name of Nitin Basra. Yes, Ian. Can you put the thought of the day? Ian. Ma'am, yes. Yes, please speak up. Good morning to you all. Today I am from third grade class. I am going to speak today's thought. Today's thought is what we learn becomes a part of us. You have a nice day ahead. Yes, very good. So today's thought is what we learn becomes a part of who we are. So it means कि हम जो भी सीखते हैं लाइफ में, what we learn, हम जो भी सीखते हैं वो हमारा एक पार्ट बन जाता है, ठीक है, वो हमारा एक हिस्सा बन जाता है। अगर आप कोई आज काम करना सीख रहे हो तो कल को आप जो भी बनोगे तो वो स्किल्स जो है आप में हमेशा रहेंगे। तो हमें क्या चीजें सीखनी चाहिए, अच्छी चीजें सीखनी चाहिए या फिर बुरी चीजें सीखनी चाहिए? We should always learn good things so that we become a good person when we grow up, right? And next is GK question for the day. So let me ask from ID with the name of Aarti Anand. Beta, please unmute yourself and speak up the GK question for the day. ID with the name of Aarti Anand. Please unmute yourself, Beta. Okay. What's your name? What is your name? ID with the name of Aarti Anand. Bache, what's your name? Ma'am, Natik. Okay, good. So Natik, can you please pick up the GK question of the day? Natik, unmute yourself, bache. Majari brother have again muted you. Where is the Taj Mahal located? And the answer is Ma'am, Marjorie brothers muted Artinand. Okay, thank you Natik, thank you so much. And just stage बेटा जब कोई कुछ बोल रहा होता है ना बीच में नहीं बोलना है, okay? Please wait. All right, so Majari brothers, please show up your face, beta. Who is there from the ID with the name of Majari brothers? Beta, you are muting everybody in the group. This is not acceptable. So thank you Yes so much, ma'am. Natik. मैम सौम्या भी यही कर रही है, सौम्या भी यही कर रही है, वो भी म्यूट कर रही है, प्लीज उसको So भी बोल दो। now we are going to give the last warning to Soumya and Majari brothers. After that, we can remove you from the group, beta. We'll have to do this. Madri brothers, Disturbance. Madri brothers की आईडी से दिलशान है. All right, so I will see to it. Right, so today's GK question is, where is the Taj Mahal located? So Taj Mahal is located in Agra. Taj Mahal, India ki one of the most beautiful buildings hai, and it is very beautiful. It is located in Agra. So now continuing with the session, I'm just going to present my screen, and
I'll just remind you all that please do not mute anybody, and especially me, because if my voice will not be audible to you, it will become a problem and it will create disturbance in the session. All right. So let's start with the session. So on your screen, you can see a picture over there, right? And the question is, write a few lines using simple present tense. आपको simple present tense use करके इस picture के बारे में you have to make some lines. You have to frame some lines. Now let me tell you one thing, that in simple present tense, what do we use? With I, we, you, they. हम क्या use करते हैं? First form of the verb. You can read on the screen. In the green box, I have written it. I, we, you, they के साथ हम be1. That means we use first form of the verb, and with he, she, it or somebody's name, we use verb. That means first form of the verb plus s or es. Okay. So you have to write the lines in the chat box, not in your copies. Right? So you can write as many lines as you want. अब one by one करके भी लिख सकते हो. Just start writing the lines using simple present tense. मैम हमें इस पिक्चर से देख के लाइन बनानी है. Yes, you have to look at this picture. लेकिन बेटे आप ध्यान रखो कि simple present tense में भी do not use ing. आप ये नहीं कहोगे the boy is playing, because in simple present tense ing use नहीं होता. आपने रूटीन के बारे में बात करनी है. सिंपल प्रेजेंट टेंस मींस आपने ये सोचना है कि ये काम आज अभी नहीं हो रहा, ये रोज होता है. You have to think like this. Do not use ing. ID with the name of JST, you are again using ing bete. So you do not need to use ing. You have simply to use the first form of the verb, ये सोचकर कि ये काम रोज होते हैं. If the sentence you have written is, yes, a boy climbs the tree. Very good. ID with the name of Anjali Soni. Good. So, a boy is sing a song nahi. This boy sings a song daily. So, you can use the words like daily, every day, every Monday, every Saturday, every month. So you have to frame sentences like this. अभी नहीं हो रहा ये काम रोज होता है. You have to think like this. Okay, so I go to school. A girl sits on the bench. Rajwinder Chauhan ji ki ID say a girl sits on the bench. Okay, a boy plays the guitar in the garden daily. So you can add daily to it, every day to it, okay, to make it more clear कि ये जो tense है हमारा simple present tense है. Very good. Girl sits on bench. The girl, Balraj Mehra की ID से बेटा see, you have again written girl playing. ing नहीं लगाना. Do not use ing. ing का meaning पता क्या होता है? ing means कि ये काम अभी हो रहा है. ये काम अभी अभी चल रहा है. तो अभी नहीं सोचना. We have to think this work happens on daily basis. Okay, there are many boys and girls. Very good. The girl is jumping is not correct. Again, आप ing use करो, which is not correct. Is listen song nahi. The boy listens. Beta Niti and others also. Please use s or esc with the verb if in case you are writing about a single person. अगर आप a boy लिख रहे हो, a girl लिख रहे हो, then please use s or es with the verb. देखो मैंने लिख रखा है स्क्रीन पे I, we, you दे के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी. और अगर ही, शी, इट नेम है, ही, शी, इट या एक है किसी का नेम है, तो हम वर्ब के साथ ses यूज करेंगे. A boy plays the guitar. This is correct. The girl skips with skipping rope. Correct. The girl is jump nahi. The girl jumps. There are many children in the garden. Very good. The boy is climb nahi aayega. Is nahi aayega. The boy climbs the tree daily. जो काम डेली होता है इज नहीं लगाना उसके साथ. द बॉय क्लाइम्स द ट्री डेली. द गर्ल जंप्स डेली. वेरी गुड. द गर्ल इज लिसन इज रॉन्ग. द गर्ल जंप्स इज करेक्ट. मैम your voice is not coming.
Is it It's not? audible. It's audible, ma'am. Right. Beta, please check your internet connection. So the next is the girl jumps. This is correct. Everyone is happy. Okay, correct. A boy is play nahi. A boy plays in the garden daily. The children are playing is wrong. ID with the name of Kulvinder Kaur. This is wrong. Children are playing wrong hai ye. The children play in the garden daily will be correct. The boy climbs the tree, right? The girl sits on the bench, correct. A boy plays with ball, correct. A boy listens to the song daily in the garden. This will be correct. Okay. From Sorish, a boy climbs. बेटा a boy है ना, एक है तो आप climbs लिखोगे. A boy climbs. The girl jumps. आप लोग जब एक की बात करते हो सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमें वर्ब के साथ SES यूज करना है बेटा. प्लीज टेक केयर ऑफ दिस. वीरेन सिंह जी की आईडी से वन बॉय इज क्लाइम अप द ट्री नहीं, वन बॉय क्लाइम्स अप द ट्री. सिंपल प्रेजेंट टेंस में बेटा इज तब आता है जब आप किसी की ऑक्यूपेशन बता रहे हो, उसका वर्क बता रहे हो. फॉर एग्जाम्पल, आई एम ए डॉक्टर, शी इज अ टीचर, ऑलराइट, आई एम ए स्टूडेंट. तब हम इज एम आर यूज करते हैं ऑक्यूपेशन के लिए. एक्शन हो रहा है या होता है रोज, उसके लिए हम इज नहीं यूज करते. Boy is playing guitar will be wrong, Himanshu. This is a boy plays guitar daily. A girl jumps daily. Soumya Singh ki ID say the boy climbs a tree. Very good. The children are playing. Beta wrong hai ye. Playing nahi aayega. The children play daily. The boy climbs a tree. Very good. At the back side of the park there is a school. ID with the name of Shinam Bansal. Please correct the spelling of their. THERE आएगा इसमें मैम. THEIR का मतलब होता है उनका, किसी का. So the correct word is THERE. Please correct this. So I've got many answers. So please make it clear. आपने simple present tense में ing use नहीं करना. Second thing is simple present is used to tell about the routine work, जो काम daily होता है. तो अगर आप सेंटेंस बना रहे हो यूजिंग ही, शी, इट और somebody's name, or if it is a single person or single thing, okay, he, she, it or somebody's name or a single thing, then you have to use s or es with the verb. और अगर I, we, you, they है हमारे पास, हमें s, es लगाने की जरूरत नहीं है verb के साथ. Is mr कब यूज करेंगे? When would we use is mr? We will use is mr only if we are going to tell about somebody's occupation. Okay, about somebody's occupation. I am a doctor, right? या फिर आप बता रहे हो कि ये चीज क्या है. This is a nice bed sheet. ये bedsheet अच्छी है. This is a nice bed sheet. जब एक्शन हो रहा है ना सिंपल प्रेजेंट टेंस में, आपने देखना है कि SES कहाँ लगाना है, कहाँ नहीं लगाना. अगर आप सिंपली किसी चीज के होने के बारे में बता रहे हो कि वो चीज ऐसी है या वो ये है, then you will use is mr. Is it clear? Show me your thumbs up. Simple present tense में if we are telling about an action which happens on daily basis, तो हम verb के साथ SES लगाएंगे या नहीं लगाएंगे वो हमारा सब्जेक्ट डिसाइड करता है. I, we, you से पता चलता है. बट अगर आप सिंपली बता रहे हो कि कोई चीज क्या है, क्या ऑक्यूपेशन है, वो चीज क्या है, कोई क्वालिटी बता रहे हो बेटा, then you will use is mr with that. For example, this is a good and this is a spacious room. तो क्वालिटी बताई कि स्पेशियस है तो आप is लगा सकते हो. लेकिन अगर एक्शन बता रहे हो डेली बेसिस वाला तो फिर आप क्या बोलोगे? she jumps daily, she goes to school daily. तब हमने is नहीं लगाना. We'll practice more of this. Now second is write few lines using simple past tense. अब हमारे पास है सिंपल पास्ट टेंस. तो सिंपल पास्ट टेंस में with every subject we use the second form of the verb. I, we, you, they, he, she, it or name. In simple past tense we always use second form of the verb. This is very simple. कोई भी subject हो, simply second form of the verb आपको लगाना है. Now in this picture you can see many students are sitting over there, right? Now you have to use simple past tense. सिंपल पास्ट मीन्स ये काम बहुत पहले हुआ था. ठीक है, आपने कहना है, आपने ये बताना है कि ये पिक्चर
पुराने टाइम की है. This picture belongs to a past time, and then you have to tell me that what happened. क्या हुआ था? So you have to use the second form of the verb. So what will you write? Past tense में बताओ. For example, I'll tell you one sentence. Okay, so in simple past tense, beta, you can use yesterday also. ठीक है? For example, if I tell you that the girl read the book on the carpet, कि उस गर्ल ने कारपेट पे बुक पढ़ी थी. Ma'am, your voice is low. It's audible, ma'am. It's audible. If I tell you the girl read a book on the carpet, कि उस लड़की ने कारपेट पे बुक पढ़ी थी, तो इसमें READ read भी होता है, read भी होता है. What are the forms of verbs of read? Read, read, read. Okay, so second form use करना है आपने. A boy is cut नहीं बेटे, past tense है, तो past में तो वैसे is नहीं आता है. A boy cut the page. Boys are painting yesterday. It is wrong. Is, am, are हम हमेशा प्रेजेंट में यूज करते हैं, पास्ट में यूज नहीं करते. A boy painted on the sheet. The children are played नहीं, the children played. और आपने ing भी यूज नहीं करना है इसमें. Boy cut the page is correct. Is play नहीं आएगा बेटा. सुखमनी राय की आईडी से कटेड कोई वर्ड नहीं होता. Forms of verbs for cut Ma'am, are your voice is low. cut. बेटा please check your internet connection. My voice is quite okay. बेटे cut की forms of verbs होती हैं cut, cut, cut. बेटा then please check your internet connection. My voice is fine. The boy played on the floor is fine. The girl drew आएगा बेटा. The girl drew a picture. Draw नहीं आएगा, drew आएगा. आपको second form use करना है. The boy played on red carpet. That is fine. The boy painted on the sheet. That is fine. A boy played. A boy drawn नहीं आएगा. A boy drew a picture. Second form use करना है. Draw, drew, drawn. Drawn is the third form of the verb. So a boy drew. A girl read. यहाँ पर read की spelling है READ, read. A girl read the book. The boy sat on the chair is correct. I have made नहीं अपनी, I made. Have जो होता है वो हम third form के साथ लगाते हैं. I made a painting yesterday. Excuse me, ma'am, जो ना yesterday से पहले क्या आता है? Yesterday का मतलब होता है जो कल बीत गया. ठीक है, तो आपने second form लगाना है. For example, the girl read the book yesterday. कुछ नहीं आया, simple line है. The girl read the book yesterday. The boy painted on the sheet is correct. A boy played. A boy drew a picture. A girl read the book. The boy sat on the chair. Okay, Avni Sharma, please correct this. I made this painting yesterday. There were many children is played. This is wrong. There were many children is played. ID with the name of Paramjit Kaur. Next is Mankaran V. Sidhu. There was a theft in this room last year. Okay, fine. The boy painted on the sheet yesterday is correct. 3 boys are sitting on chair. This is wrong. Mayank Raj, beta, please correct this sentence. 3 boys are sitting नहीं. Are sitting का मतलब है वो अभी बैठे हुए हैं. बट हमें तो सिंपल पास्ट टेंस यूज करना है. सिंपल पास्ट में हम सेकेंड फॉर्म लगाएंगे बस. 3 boys sat on the chair. That means आप लोगों को अभी फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स नहीं आती हैं, आप लोगों ने लर्न नहीं करी हैं. ओके, और जो सीईटी होगा बेटा उसमें ये फॉर्म्स ऑफ वर्ब सब आएंगी. So please learn the forms of verbs. अब इनको डेली बेसिस पे लर्न करो. यस बेटे. मैम मैंने चेक कर लिया इंटरनेट कनेक्शन वगैरह. मैम 4 GB पड़ा है अभी.
But beta, only you are complaining, otherwise there is no complaint from anybody. You can log in from another device. आप किसी और phone से भी log in कर सकते हो, right? If you have another phone at your home. All right. The three boys sat on the chair. The boy drew a picture. A girl read the book very good. The book stand is near the girl. बेटा is हम present में use करते हैं. In the past tense we do not use is. A girl read a book. Children did different. is जो है वो हम present में use करते हैं. Past tense में तो हम is use करते ही नहीं. मैम कैसे Children करना है? बेटा किसी और फोन से लॉग इन करो आप, अगर आपके पास स्पेयर फोन है तो. मैम है नाउ देन लॉग इन फ्रॉम देयर. व्हाट्सएप उस पे आप सेंड करो, व्हाट्सएप पे खुद को लिंक सेंड करो एंड देन यू कैन लॉग इन फ्रॉम देयर. ओके. नाउ नेक्स्ट इज चिल्ड्रन डिड डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क. करेक्ट. चिल्ड्रन प्ले फन नहीं आएगा. दिस इज रॉन्ग. द बॉय कट द पेपर. सो दैट्स फाइन. So please pay attention on the usage of the tenses. Now next is simple future tense. Again there is a picture which I'm going to show. Right. So simple future tense के rules क्या होते हैं? With I and we, we use shall. I और we के साथ हम shall plus verb की first form use करते हैं, right? And with you, they, he, she, it or name, we use will plus first form. Okay? With I and we, जिसमें हम अपनी बात करते हैं. I का मतलब भी मैं हूँ, we का मतलब हम सब. इसमें मैं आ जाती हूँ, right? This with I and we shall use करना है with the first form of the verb, and with other subjects you have to use will. Now you assume and suppose that this picture belongs to future. कि कल ऐसा होगा. ठीक है, आपने बताना है कि कल ऐसा होगा. तब कैसे लिखोगे? For example, I suggest you one sentence. The girls will play in the garden tomorrow. तो जो आने वाला कल होता है उसके साथ हम tomorrow यूज करते हैं. ठीक है. The girls will play in the garden tomorrow. Yes, boys will slide. Yesterday नहीं आता इसमें. Yesterday तो चीज ही अलग है. Yesterday तो past को belong करता है ना. Past में हो चुका है जो काम. That is yesterday. हमने will या shall यूज करना है. और I के साथ हम shall यूज करते हैं Ian. So I shall go to park tomorrow. I will नहीं आएगा. I shall go to park tomorrow. The boy will run tomorrow. The children will play. We will नहीं आएगा. We shall. ID with the name of Vasudha Soni. We shall run tomorrow. Okay? We shall run tomorrow. Tanishka, everyone is happy is wrong. Everyone will. Everyone is happy will be wrong, beta. The boy is play. हम future tense में is use नहीं करते बच्चे. Will और shall use करते हैं. Take care of this thing. Children will play different types of games. Yes, we shall play. They will go to playground. That is correct. I shall go to park yesterday and enjoy. This is also correct. A boy will play with the ball. Correct. The kangaroo will skip. Correct. So you have learned how to use simple future tense. Simply you have to use will or shall. I or be हो तो shall. मैम जो शेफर्ड लेसन था वो उसका बदल के आएगा पेपर में. Which lesson बेटे? कंप्रिहेंशन में. Comprehension में कैसे आप बोल रहे हो? What are you talking about? Comprehension इसमें कैसे आया बच्चे? अभी तो हम tenses discuss कर रहे हैं. Comprehension कैसे आ गया? If you have any doubt, Aryan, you can call me after the session, okay? Just give me a call after the session. The girls will fish tomorrow. The girls will go for fishing tomorrow. All right. So I guess simple future is clear to you. In simple future, we use shall plus first form of the verb with I and we. और बाकी सभी के साथ हम will और first form of the verb use करते हैं. Okay. Now moving ahead, there is an interesting activity for you here. Okay. So here's the activity. First of all, I'll show you a small video. All right. एक आपको video दिखाऊंगी मैं. That is a song actually.
Please pin my video, all of you. Please pin my video. मेरी video pin कर लो so that you can listen to it. मैम कैसे करनी है? वीडियो कहाँ है? कैसे करनी है? मैम आई कांट सी योर स्क्रीन। मैम कैसे करनी है? मैम आई योर वॉइस इज नॉट ऑडिबल। Yes, Sania ma'am, voice is not audible. Can we leave the meeting, ma'am? Can we leave the meeting, ma'am? Can we leave? आर्यन, आप मैम क्यों म्यूट कर रहे हो बेटे? आर्यन, मैम not पिन mute कैसे anyone. करना है? मैम ममता, सोनिया मैम की हाँ जी बेटा। सानिया मैम, आई थिंक यू आर म्यूटेड, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। मैम पिन पिन कहाँ पे करना है? Beta, please wait. The voice of the video will not be audible, so let it be. Okay, there is a song. उसके lyrics मैंने देखो लिखे हुए हैं. So if you can see my screen, the lyrics of the song are there. So it says that मेरे दद्दू पहने डाइपर, चश्मे पर उनके वाइपर. Okay, so you have to Sania translate ma'am, this someone line. is presenting his or her screen, that's why your screen is not visible. Okay, ma'am, I'll check. मैम प्लीज रिपीट अगेन। Please wait for a while, बच्चे. Ma'am, again someone has present. मैम प्लीज स्पीक अगेन। ममता गोगना के नाम से जिसने ज्वाइन किया है, बेटे आप अपने डिवाइस क्यों टच कर रहे हो? बार बार मैम की स्क्रीन देखो जा रही है। ममता गोगना के नाम से जिसने ज्वाइन किया है। मैम वो गलती से हो गया। Okay, so now if you can see, you can have a look on the screen. There is a song. This is a song of Govinda. Okay, so you can read these lines. Yeah, these are very funny lines. मेरे दद्दू पहने डाइपर, चश्मे पर उनके वाइपर. डैडी की टूटे हड्डी जब खेले वो कबड्डी. मैंने एवरेस्ट पे फुटबॉल खेला है, दोनों हाथों से ट्रेन को धकेला है. कुश्ती में दारा सिंह मेरा चेला है, मेरे घोड़ों का चांद पे तबेला है. So you have to translate these lines, okay, in English. इन सभी में ना verbs use करे हुए हैं. So you have to translate these lines. How will you translate these lines? First one is मेरे दद्दू पहने डाइपर, चश्मे पर उनके वाइपर. Let me do it for you. दिख रही है बेटे, दिख रही है. Please check it once again. It is visible. Okay, so what do you call daddu in English? मैम प्लीज स्पीक मैम अगेन। यू आर म्यूटेड, सबरीना हैज म्यूटेड यू। सब वो मीटिंग लेफ्ट कर दी इसने साथ ही। मैम प्लीज स्पीक अगेन। Sania ma'am, you are muted, I think. This is too. So yes. So my grandfather wears diapers every day because फर्स्ट फॉर्म है ना, वो आपकी फर्स्ट फॉर्म आएगी क्योंकि वो रोज पहनते हैं. माय ग्रैंडफादर वेयर्स अ डायपर एवरी डे एंड ही हैज ग्लास वाइपर्स ऑन हिज स्पेक्टिकल्स. सो यू कैन टेक हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स आल्सो. वेरी गुड. माय ग्रैंडपा किसी और ने प्रेजेंट की होगी. प्लीज वेट. Yes, ma'am, बेटा yes. दिस इज रियली टू अनोइंग, यू सी.
Okay, now it's visible, I suppose. So next is डैडी की टूटे हड्डी जब खेले वो कबड्डी. तो जब मेरे डैडी कबड्डी खेलते हैं तो उनकी हड्डी हमेशा टूटती है. How will you translate this in English? Whenever my dad plays. Yes, कैसे translate करोगे? Second Ma'am, line. please speak again. Okay, second line is डैडी की टूटे हड्डी जब खेले वो कबड्डी. So how will you translate this in English? कैसे करोगे? Try it. Come on, try it fast. Okay, when my dad plays kabaddi, then what happens? फिर उनकी हड्डी हमेशा टूटती है. Whenever my dad plays kabaddi, his bones always break. His bones always break. His bone fractures or break his spine. Good. My dad gets injured bones whenever he plays kabaddis. Beta, please try to write yourself. I suggest not to take help of, इतनी भी हेल्प नहीं लेनी कि एक भी मिस्टेक नजर नहीं आए. मुझे साफ पता चलता है कि आपके पेरेंट्स ने ही कंप्लीट सेंटेंस लिखा है. Alright. Great. Very good. When my father plays kabaddi, then his bones always break. Broken नहीं, break आएगा. Break. Okay. Now the third one is मैंने एवरेस्ट पे फुटबॉल खेला है. Next is मैंने एवरेस्ट पे फुटबॉल खेला है. Okay, I played football on Everest. Okay, very good. I played football on Everest. Okay, good enough. Very good. दोनों हाथों से ट्रेन को धकेला है. दोनों हाथों से ट्रेन को धकेला है. Let me see. How to translate this? दोनों हाथों से ट्रेन को धकेला है. धकेला means उसको push करना, धक्का लगाना with both the hands. Two hands. I pushed train with my hand. Help us to push the train. Push the train with both hands. Okay, very good. Next, कुश्ती में दारा सिंह मेरा चेला है. चेला means my student. And kushti is a kind of wrestling, you can also say. Yes, dangal. All right. So kushti में दारा सिंह मेरा चेला है. So दारा सिंह is my student. Okay, in kushti. Very good. That's great. And next is मेरे घोड़ों का चांद पे तबेला है. तबेला means ऐसी जगह जहां घोड़े रहते हैं. It's called stable. ठीक है? Stable, अस्तबल, न तबेला जिसको हम कहते हैं. Ma'am, please repeat again. मेरे घोड़ों का चांद पे तबेला है. जो मेरे घोड़े हैं उनका जो तबेला है, तबेला मतलब उनका स्टेबल, वो चांद के ऊपर है. So how will you translate this? Excuse me, ma'am. आपको किसी ने म्यूट कर दिया है. Yes, Sonia ma'am, you are muted. Okay, thank you now. मैम ने मैं कुछ बोल तो हम कैसे लिखेंगे इसको? लास्ट सेंटेंस को कैसे लिखेंगे? My horses. ऐसे my horses stable is on the moon. And someone has presented his screen, that's why your screen is not visible.
No issues, ma'am. This is the last slide I wanted to show. Ma'am, actually, laptop was showing. Okay, my horse's Again. stable is on the moon. See, I have written the sentence. I have translated it. My horse's stable is on the moon. Very good. not visible. It's okay, beta. It's okay if the screen is not visible. That's fine. This was the last slide I wanted to present. So I hope you enjoyed today's activity. Right? This is the way you can translate sentences. आप sentences को कोई भी song को भी translate कर सकते हो. All right. So that's all from my side for today, and I hope that आपको tenses अच्छे से अब learn होने चाहिए. I need that आप सभी लोग अच्छे से tenses को समझो और learn करो. Okay. So thank you so much for your time, everybody. Over to Rupinder ma'am now. बेटे कुलविंदर कौर के नाम की आईडी से जिसने ज्वाइन किया है, अपनी स्क्रीन प्रेजेंट करनी बंद करो बेटे. स्टॉप प्रेजेंटिंग बेटा. हु हैज जॉइंड विद द नेम ऑफ कुलविंदर कौर. और वंशिका, आप बेटे सबको म्यूट कर रहे हो. मैं रिमूव कर दूंगी राजा इसके बाद आपने किसी को रिमूव किया तो, सॉरी म्यूट किया तो. वंशिका, डोंट टच एनीवेयर ऑन योर डिवाइस बेटे. Thank you, Sonia ma'am. Good morning, everyone. Thank you, ma'am. Okay. So again, everybody is enjoying the game called Mute Each Other. है ना? Everybody is enjoying the game called Mute Each Other. क्योंकि सारे एक दूसरे नु म्यूट कर रहे हैं, खूब एंजॉय कर रहे हैं. सारे कैमरास बंद करके बैठे हुए आई सपोज, है ना? You must turn your cameras on so that the teacher can keep an eye on you. Okay? Good morning, ma'am. Better keep yourself on mute and send messages in the chat box. Because once you will start wishing, others will also start wishing. Okay? And no need to send emojis, please. Better don't send emojis. Good morning messages share kar rahe ho. Don't send emojis. Okay. So ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟੇ ਮੈਮ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵਰਕਸ਼ੀਟ. Who has done the worksheet? Okay, show me your thumbs up once. किने किने की हुई है? बेटे बोलना नहीं, just show me your thumbs up. Show me your thumbs up just जिन जिन की थी. अच्छा, एक चीज मैं होर कही सी कि अगर किसी ने काम नहीं किया होएगा सवेरे मॉर्निंग वाला, जरूरी नहीं है कि सब दा काम होया होएगा. जस्ट तुसी करना की है, एक बार चेक जरूर करना है कि की काम सेंड किया गया है. ठीक है? ओके ओके, ठीक है. जिन्होंने किया होया दैट्स वेरी गुड. लेट मी क्विकली स्टार्ट प्रेजेंटिंग माय स्क्रीन. Tarjuma, my screen is visible. यस मैम विजिबल, बट थोड़ी सी जूम कर लो. हाँ जी, यस. ओके बेटे. सो मैम रीड करेंगे, अदरवाइज बेटे तुसी अपने डिवाइस को टच करके भी स्क्रीन ਨੂੰ ਜ਼ੂਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਥੋੜਾ. ਠੀਕ ਹੈ बेटे, तुसी अपनी स्क्रीन ਨੂੰ टच करके भी ਜ਼ੂਮ कर सकते ਆ. Okay, better this way. Okay बेटे. Yes, ma'am, so yes. worksheet पार्ट 6 ਤੇ ਵਚਨ ਬਦਲੋ ਸੀ. ਪਾर्ट 6 ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਵਿਦਿਆ ਚਾਨਣ ਹੋਏ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ ਵੈਸੇ. ठीक है? सो अगर कोई बच्चा जिन्हें पहले ज्वाइन नहीं की होगी क्लास या मिस होएगी, सॉरी, मैं एक बार क्विकली फटाफट फिर तो स्टोरी सुना रही हूँ.
Someone मैम has किसी ने started यस present. हाँ यस जी. बेटे please stop presenting the screen. Give me one. बेटे ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਕਰੀਨ ਨੂੰ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਲੀਜ਼. ਠੀਕ ਹੈ, ਇਨ दैट ਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਮ ਦੀ ਸਕਰੀਨ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ. ਪਲੀਜ਼ ਡੋਨਟ ਟੱਚ ਐਨੀਵੇਅਰ ਔਨ ਦ ਸਕਰੀਨ. ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਵਰਕਸ਼ੀਟ 6 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈਪਟਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਪੜਿਆ ਸੀ, ਫੈਲੇ ਵਿਦਿਆ ਚਾਨਣ ਹੋਏ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ. ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਘੁਮਿਆਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬੀ ਹੈ. ਸੋ ਸੁਮਿਤ ਹੈ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਮ, ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਖਿਡੌਣੇ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬਰਤਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਔਰ ਉਹ ਸੁਮਿਤ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾ ਕੇ ਵੇਚਦਾ ਹੈ. ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਖਿਡੌਣੇ ਵੇਚਣ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੇਠ, ਇੱਕ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਟੇ ਤੂੰ ਇੰਨੀ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਕਿਉਂ ਖਿਡੌਣੇ ਵੇਚ ਰਿਹਾ? ਤੇ ਸੁਮਿਤ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤਾ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਖਿਡੌਣੇ ਵੇਚਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ. ਸੋ ਸੁਮਿਤ ਸੇਠ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ. ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਸੁਮਿਤ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸੁਮਿਤ ਦਾ ਕਿਸੇ ਅੱਛੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਦਾਖਲਾ ਕਰਵਾਉਣਗੇ. ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਮਿਤ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਅਧਿਆਪਕ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਖੋਲਦਾ ਹੈ. ਤੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਹ ਖੁਦ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਧਿਆਪਕ ਬਣਦਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਆਪਣੀ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ. ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਚਾਨਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵੀ ਫੈਲਾਉਂਦਾ ਹੈ. ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਚੈਪਟਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ. ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਅਰਥ, ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰਸ ਵਗੈਰਾ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਰਕਸ਼ੀਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬੇਟੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੁੱਕ ਨੋਟਬੁੱਕ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ. ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਵਰਕਸ਼ੀਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰਨਾ. ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਸ਼ਬਦ ਅਰਥ ਹੈ, ਵਾਕ ਬਣਾਓ. ਮੈਂ ਆਨਸਰਸ ਨਹੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੀ ਬੇਟੇ, ਬਟ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀਆਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਖਿਡੌਣੇ ਵਾਕ ਬਣਾਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ. ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀ ਜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਂਟੈਂਸ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਖਿਡੌਣੇ ਨਾਲ ਖੇਡ. ਸੈਂਟੈਂਸ ਗਲਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਈ ਬੱਚੇ ਏਦਾਂ ਦੇ ਵਾਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਬਟ ਬੇਟੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ 3rd ਕਲਾਸ ਚ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ 2 ਵਰਡਸ ਲਿਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਖਿਡੌਣੇ ਨਾਲ ਖੇਡ ਇਹ ਲਿਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸੈਂਟੈਂਸ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ. ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖਿਡੌਣੇ ਹਨ. ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਟੈਂਸ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 5-6 ਵਰਡਸ ਹੋਣ ਘੱਟੋ ਘੱਟ. ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬੇ ਵਾਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰੋਗੇ, ਬਟ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਛੋਟੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਦੱਸਿਆ ਅੱਜ ਗਰਮੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ. ਠੀਕ ਹੈ, तो थोड़ी जी कोशिश करनी है कि सेंटेंस जरा ਵੱਡੇ ਹੋਣ. ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਮੈਂ ਡਿਸਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ. ਛੋਟੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ. ਸੁਮਿਤ ਨੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਕਮੀਜ਼ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ? ਫਟੀ ਜਿਹੀ. ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਚੈਪਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਫੈਲੇ ਵਿਦਿਆ ਚਾਨਣ ਹੋਏ. ਸੋ ਕਾਹਦਾ ਚਾਨਣ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ? ਵਿਦਿਆ ਦਾ. ਠੀਕ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਬੇਟੇ ਪਲੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਾ ਸਾਰੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਖਣੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅਕਸਰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੀ ਕੰਪਲੇਨ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦੇ. ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਟਨ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵੀ ਹੋਏਗੀ. ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੁੱਕ ਰੱਖ ਲਓ ਔਰ ਉੱਤਰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਰਫ ਨੋਟਬੁੱਕ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਖਣੇ ਆ. ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗੇਨ ਵਚਨ ਬਦਲੋ. ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਟੌਪਿਕ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਬੇਟੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ PT1 ਦੀ ਗ੍ਰਾਮਰ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਲਰਨ ਕਰਨੀ ਹੈ. ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਬਦਲੋ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕੀਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਬਦਲੋ ਸਿਰਫ PT2 ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗ੍ਰਾਮਰ ਪੂਰੀ ਆਣੀ ਹੈ ਨਾ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, PT1 ਵਾਲੀ ਵੀ, PT2 ਵਾਲੀ ਵੀ. ਸੋ ਸ਼ਾਰਟ ਗ੍ਰਾਮਰ ਹੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ. ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਵਚਨ ਬਦਲੋ. ਚਾਬੀ, ਚਾਬੀਆਂ. ਠੀਕ ਹੈ, ਮੋਟਾ, ਮੋਟੇ. ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗੀ. ਲੈਟ ਮੀ ਜਸਟ ਕੁਇਕਲੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਅਨਦਰ ਸਕਰੀਨ. ਓਕੇ,
Ma'am, Soumya Singh has muted you. Rupinder ma'am, you are not audible. ਬੇਟੇ ਮੈਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਦੁਬਾਰਾ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਪਲੀਜ਼ ਡੂ ਨਾਟ ਡੂ ਦਿਸ। someone saying is phone battery low, okay, continuously 3 messages ਆ ਗਏ, ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ phone battery 2% ਹੈ। ਬੇਟੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ मीटिंग है 9 o'clock 9:30 स्टार्ट होनी, प्लीज चार्ज योर फोन प्रॉपरली। मैम मैंने चार्ज किया हुआ था, मैम 100% ओके, दैट्स थी। ओके, दैट्स ओके, you can leave. The child with the ID of Rajvinder Chauhan, please do not send unnecessarily messages bete, start sending messages। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਅਰਥ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, I hope ਤੁਸੀਂ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ। Let me see। मैम अगेन यू आर म्यूटेड। सबरीना बेटा मैं रिमूव कर दांगी बेटा ਤੁਹਾਨੂੰ। सबरीना, रुपिंदर मैम यू आर म्यूटेड। मैम वैसे भी सबरीना काफी देर दी पूछ रही है, कैन आई लीव द मीटिंग? यस मैम, यस। So you can probably just leave mute। yeah. Okay बेटे। सो पहला वर्ड थोड़ी स्क्रीन पे है, शब्द का अर्थ दसना है। आई हैवंट रिसीव्ड, सिर्फ एक बच्चा बलराज मेहरा दी आईडी तो जिदा आंसर आया है मैनू हाले तक। ओके, वेरी गुड। आई होप कि सब बेटे बुक्स नहीं कोल रखनिया जो तुसी काम कर रहे हो ना, प्लीज डू नॉट कीप योर बुक्स विद यू, ठीक है? बेटे 1 मिनट दो जरा। मैम लीव कर दें? Who is this? मेरी स्क्रीन वाली स्लाइड क्यों विजिबल नहीं हो रही ਤੁਹਾਡੀ स्क्रीन पे? प्रभजोमन, क्वेश्चन नंबर 1 is not visible on your screen? विजिबल मैम, इट्स विजिबल। शब्द का अर्थ दसो। Okay, now हाँ जी, okay, now it's visible। ठीक है, हाँ जी बेटे। So again वसुधा सोनी, बेटे प्लीज स्टॉप सेंडिंग अननेसेसरी मैसेजेस, ठीक है? सो शब्द का अर्थ दसना है। दर दर मतलब होता है थां थां, ठीक है? ओके, नेक्स्ट वर्ड चेक करो बेटे। बच्चे प्लीज तुसी थोड़ा अपनी स्क्रीन नु म्यूज नु जूम कर सकते हो प्लीज, ठीक है? ओके, see as expected, Soumya Singh, please stop sending message। स्क्रीन विजिबल है बेटे, स्क्रीन हुन विजिबल है, इस टाइम विजिबल है। ओके, कुछ बच्चे हैं जिन्होंने स्टेटमेंट नु शायद चंगी तरह रीड नहीं किया। बेटे एक बारी स्टेटमेंट नु अच्छी तरह रीड करो जरा, देन प्रोबेबली तो लगेगा कि तुसी आंसर शायद गलत दे रहे सी जिन्होंने हुने ऊपर आंसर भेजा है। ओके, ऑलराइट। सो शब्द का अर्थ दसना है स्वस्थ, ठीक है? स्वस्थ शब्द का सारिਆਂ ਨੂੰ पता लग गया है कि अर्थ ਹੁੰਦਾ है सेहतमंद। पर ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਬੇਟੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ,
ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰੈਕਟ ਆਪਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਰੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਸਿਹਤਮੰਦ ਦੇ ਸਪੈਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਮੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟਿੱਪੀ ਆਣੀ ਹੈ ਬੇਟੇ। ਸੋ ਬੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਹੈ ਬੇਟੇ, ਪਲੀਜ਼ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਸਵਸਥ, ਸਿਹਤਮੰਦ, ਮੰਮੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟਿੱਪੀ ਆਣੀ ਹੈ। ਸੋ A is the correct answer. Yes. बेटे प्लीज एक दूसरे ਨੂੰ म्यूट करना बंद करो। I can see on my screen कुछ बच्चे एक दूसरे ਨੂੰ म्यूट कर रहे हैं। All right. ਹੁਣ सरबजीत कौर मान दी आईडी तो प्लीज स्टॉप म्यूटिंग ईच अदर। बेटे मैं स्टेटमेंट ਨੂੰ पढ़ रही ਹਾਂ, बहुत ध्यान ਨਾਲ सुनना है क्योंकि I'm using my phone में भी ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ੂਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਸਿਰਫ ਦੋ ਹੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੀ ਬੈਕ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਸਨੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਹੈ, ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੈਪਟਰ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਕਿਸਨੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆਲਰੇਡੀ। ਬੇਟਾ ਬਾਹਰ ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਠੰਡ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਨੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਚੈਪਟਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਹੁਣੇ, ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਡਾਇਲੌਗ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਨੇ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਸੰਜੀਵ ਦੁੱਗਲ ਦੀ ਆਈਡੀ ਤੋਂ ਬੇਟੇ ਸਟਾਪ ਸੈਂਡਿੰਗ ਇਮੋਜੀਜ਼, ਡੋंट send unnecessary messages. सौम्या सिंह कौन है? शी सेइंग कि मैंने अभी तक कोई चैप्टर नहीं किया है। She has left the meeting, ma'am. I'm taking the screenshot of the message. ओके, सो किसने क्या सी? सेठ ने। ठीक है, दयालु सेठ, जिन्ना दयालु की हुंदा है काइंड, ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰੇ ਲਈ ਨਰਮ ਦਿਲ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸੁਮਿਤ ਨੂੰ ਕਿ ਬੇਟੇ ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਠੰਡ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹੋ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸੁਮਿਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਇਆ, ਰੋਟੀ ਖਵਾਈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਸਵੈਟਰ ਵੀ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ। All right. Next is Bachchan Badlo. Prabjuma, my screen is visible. Yes, ma'am. Yes, it's visible. Okay, maybe मैं अपने दूसरे डिवाइस तो शायद लॉग आउट हो गई। ठीक है, Yes, ma'am. Yes, clearly visible. okay. हाँ जी बेटे, ਚਮਚਾ ਤੇ ਭੈਣ ਦਾ ਵਚਨ ਬਦਲੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੇਟੇ ਦੇਖੋ, ਸਿਰਫ 10 ਵਰਡਸ ਵਚਨ ਬਦਲੋ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ PT1 ਚ ਹੈ, ਔਰ ਸਿਰਫ 10 ਵਰਡਸ ਹੀ ਵਚਨ ਬਦਲੋ ਦੇ PT2 ਚ ਹੈ। ਸੋ 20 ਵਰਡਸ ਹੈ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਏ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਚਨ ਬਦਲੋ ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮੈਮ ਨੇ ਸੈਂਡ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅੱਜ ਮੈਮ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵਰਕਸ਼ੀਟ ਵੀ ਸੈਂਡ ਕੀਤੀ, ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਸੇਮ ਵਰਡਸ ਹੀ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭਜੋ ਮੈਮ, ਆਈ ਹੋਪ ਦੇ ਆਰ ਸੈਂਡਿੰਗ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰਸ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਕਰੀਨ ਵਿਊ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ।
Yes, ma'am. Yes. All has written answer C. ਓਕੇ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਸੋ ਬੇਟੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਦੱਸੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਬਦਲੋ ਜਾਂ ਲਿੰਗ ਬਦਲੋ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਏਦਾਂ ਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਆਨਸਰਸ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਹੋਣ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਆਨਸਰਸ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਹੋਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 1 ਬਾय 1 ਆਨਸਰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕਦਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਅੱਛਾ ਚਮਚਾ ਤੇ ਪੈਣ ਹੈ ਤੇ ਫਟਾਫਟ ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਲਿਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਓਕੇ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਪਹਿਲਾਂ, ਚਮਚਾ ਦਾ ਦੇਖੋ ਵਚਨ ਬਦਲੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚਮਚੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਬੀ ਤੇ ਸੀ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚਮਚਾ ਦਾ ਚਮਚੇ ਵਰਡ ਸਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭੈਣ ਦਾ ਸਹੀ ਵਚਨ ਬਦਲੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭੈਣ ਦਾ ਸਹੀ ਵਚਨ ਬਦਲੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਭੈਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਣੇ ਨੂੰ ਕੰਨਾ ਉੱਤੇ ਬਿੰਦੀ ਭੈਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਸੋ ਸੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਪਸ਼ਨ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੋਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਬਦਲੋ ਕਰਨੇ ਹੈ ਬੇਟੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਨਾ ਪਾ ਕੇ ਉੱਪਰ ਬਿੰਦੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਐੜੇ ਨੂੰ ਕੰਨਾ ਪਾ ਕੇ ਉੱਪਰ ਬਿੰਦੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕੁੜੀ ਦਾ ਕੁੜੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਐੜੇ ਨੂੰ ਕੰਨਾ ਉੱਪਰ ਬਿੰਦੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਬਿੰਦੀ ਪਾਣਾ ਬੇਟੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿੰਦੀ ਟਿੱਪੀ ਅੱਧਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਗਲਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਸੈਕਿੰਡ ਕਲਾਸ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਲੈਟ ਮੀ ਜਸਟ stop presenting my screen bete। okay, ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੈ ਤਾਂ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਬੇਟੇ। ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮਿਊਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ। ਬੇਟੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਅਗਰ ਡਾਊਟ ਹੈ ਸੋ ਫਾਰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕੰਮ। no। ਓਕੇ, B and C ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਮ ਵਰਡ ਨਹੀਂ मैम ਸੀ। no। ਫੈਲਨ ਬੇਟੇ B ਤੇ C ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਮ ਵਰਡ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫੈਲਨ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ B ਤੇ C ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਮ ਵਰਡ ਸੀ। ਬੱਚੇ ਦੋਨੋਂ ਵਰਡ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਭੈਣ ਸੀ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ਼ਨ, ਸੈਕਿੰਡ ਵਿੱਚ ਆਪਸ਼ਨ ਭੈਣਾ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਚਮਚੇ ਸੇਮ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੋਨੋਂ ਵਰਡਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੈਣ ਦਾ ਭੈਣ ਹੀ ਵਚਨ ਬਦਲੋ ਸੀ ਔਰ ਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੈਣ ਦਾ ਭੈਣਾ ਵਚਨ ਬਦਲੋ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਰਾਈਟ। ਓਕੇ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੈ ਬੇਟੇ ਪਲੀਜ਼ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਸੈਂਡ ਕਰੋਗੇ